Okay. So first, because I guess this is the first session from web development team in GDSC, and I believe GDSC ने इससे पहले compose camp किया था, वही एक session था जो majorly highlight हुआ था. So the first thing I would like to tell you guys about GDSC is that I'm really thankful कि GDSC such thing like GDSC exists because उसी के कारण you are able to see me over here. मैं video on करके आपके सामने बैठा हूँ. We are able to network with each other. So उसका benefit क्या होने वाला है? So benefit simple है that जो भी काम मैंने like today I'm going to deliver this session on web development. So पहली चीज जो आप मेरे से सीखने वाले हैं, you are going to learn about web development from me, from my personal experience. मैं वो YouTube या theoretical बातें नहीं करने वाला. I'm going to show you the stuff that I have already done in web development, right? And the second thing, I'll be able to explain and share my experience जो मेरे को क्या फायदा हुआ web development सीख के, क्योंकि मैं already I'm doing this thing since like 3 years now. This skill that I've developed over the 3 years, I've gained quite some experience, और वो experience मुझे share करने का मौका मिलेगा because of this GDSC platform. So what I want from you guys is that you should support such communities, because इसी के कारण we'll be able to meet with each other, network with each other, and learn from each other. That's the major advantage of such communities. So GFG, GDSC and all बहुत सारी communities है. Just stay in touch, stay intact, और थोड़ा शेयर करते रहिए कीजिए. थैंक यू. सो अब हम शुरू करते हैं. आज के सेशन के लिए मैंने एक एक्टिविटी प्लान की है, तो अगर आप लोगों में से कोई ऑलरेडी थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, आई बिलीव सारे कर रहे होंगे. अगर कोई बिल्कुल नूब है, जिनको फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल नहीं पता HTML या CSS क्या होती है, डोंट वरी. मैं आपको रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ. स्टार्टिंग से हम समझेंगे कि हमारे क्या क्या रिसोर्सेज रहने चाहिए, क्या क्या हमारा पाथ रहना चाहिए कि इस तरीके से हमें सीखना है, so that we are able to learn properly what is web development, what is web designing, ये web क्या चीज होती है. Okay, so I'm going to clear that roadmap for you guys for today's session. So अगर तो आप लोग मेरे को पहले से जानते हैं, like I can see already some familiar names. So आप लोगों को पता होगा the most like my most favorite website जहाँ से मैं सब कुछ सीखता हूँ, and मैं अगर C++ का सेशन करूंगा, मैं तब भी वही वेबसाइट खोलूंगा. आज वेब डेवलपमेंट का सेशन है, उसके लिए भी, एंड पाइथन फॉर एनीथिंग I go to this website, my personal favorite, WC Schools. The only reason being, if you go to this website, you will be able to see, you can learn HTML, CSS, Bootstrap, and this is like HTML, CSS part, but not just that. You're able to learn a very like high in demand language, JavaScript. Then you are able to learn how to do, अगर SQL सीखना है, MySQL सीखनी है, Python, these server side scripts, you're able to learn that from this same website. एक बार आपको इस वेबसाइट की आदत पड़ जाती है, तो क्या होगा that it's just like a book. जिन लोगों को बुक से पढ़ने की आदत होती है, फिर वो ऐसे डिजिटल मीडिया नहीं एक्सेस कर सकते, नहीं यूज कर सकते, उनको उतना मजा नहीं आता. उसी तरीके से जब आपको इस वेबसाइट से पढ़ने की आदत बन गई, यू विल बी एबल टू लर्न HTML, जावास्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग. जो नहीं भी सीखना, वो भी आप झटके से सीख लेंगे, बिकॉज आई वाज एबल टू लर्न HTML, CSS फ्रॉम हियर. नॉट जस्ट दैट, मैंने जावास्क्रिप्ट इस पूरी वेबसाइट से सिर्फ एक दिन में रीड आउट कर लिया था. जैसे हम एग्जाम से एक दिन पहले रीड कर लेते हैं ना, मैंने उससे मतलब इस वेबसाइट से ऐसे ही रीड कर लिया था. और बिलीव मी, दैट वाज एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस. मतलब मजा आया था कि एक दिन में जावास्क्रिप्ट खत्म कर ली. हाँ, उसके बाद प्रैक्टिस करते करते टाइम लगता रहता है, टाइम जाता रहता है. देन आई वाज एबल टू लर्न पाइथन. जब मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में थी, पाइथन इसी वेबसाइट से सीखी थी. एंड जावा भी इसी वेबसाइट से. C++ अगेन फ्रॉम दिस सेम वेबसाइट. अब मेरे को एक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें मेरे को R यूज करनी थी, तो R भी मैंने इस वेबसाइट से सीखी. सो यू कैन सी दैट ये वेबसाइट, अगर मैंने इतना कुछ इस वेबसाइट से सीख लिया, तो कुछ तो होगा ना इस वेबसाइट में जो मैं इसी से कर रहा हूँ. Okay, and you will be able to understand that once we open this Learn HTML page. Over here, you'll see all the topics, all the important topics जो आपको HTML में आने चाहिए. Okay, you'll be able to see the whole list. इसमें से मैं कुछ major आपको topics बता देता हूँ, that these are the topics you need to learn, जिसके थ्रू फिर आप CSS में move on कर सकते हैं, because we have 3 things in web development which are like the foundational blocks of this whole field. The first thing is HTML. Second thing is CSS, and the third thing is JavaScript. ये 3 चीजें अगर आप कैप्चर कर लेते हैं, you can call yourself a web developer. HTML, a little something about HTML. It's a standard markup language for web pages. So I'll be telling you this stuff, the markup language. इसको थोड़ा मैं highlight करना चाहूंगा. HTML stands for hypertext markup language. We all know that. So this is a category of markup language. जो ये language है, this is categorized under markup language.
अब मार्कअप लैंग्वेज है, सो और भी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती होंगी, राइट? So for me, there are three types of languages that exist in the market. The first is markup language, as we are reading it. Second one is programming language, and the third one is scripting language. अब HTML specifically एक markup language है. So you will see a lot other markup languages like XML. Then I have YAML, that is also a markup language. YAML, yet another markup language. XML, extensible markup language, and then we have HTML. We have three types of markup. We have three languages under the category of markup languages. So let's understand what is a markup language. मैं थोड़ा सा fast बोलूंगा, and I have I guess Ishnur with me who is taking all the notes for this session. So आपको notes भी इस session के deliver हो जाएंगे, and आपको ये recorded session भी deliver हो जाएगा. In case मैं कोई point बोलता हूँ जो आपके mind में stuck हो गया हो, कुछ important लगा हो, तो आप उसको revise कर सकते हैं. So what I was telling about is this markup language. Markup language defines a structure of a document. Okay, the highlighted words are structure and document. So markup languages आपको एक document बनाने में help करेंगी और एक structural format में help करेंगी. Like you can take an example of PDF. उसमें क्या देखते हैं हम? Images देखते हैं, text देखते हैं. We also see some hyperlinks. अब hyperlinks क्या होती है उसमें कि हम एक link पे click करते हैं and it redirects us to a new website, a new web page, or you can say a new document. Okay, so we have hyperlinks in that as well. In case you guys don't know about hyperlinks, I would prefer कि आप Google करें. थोड़ा Google करने की भी आदत बनाएंगे, then you will be able to learn more quickly and efficiently. Okay, but my work over here is to introduce you to such terms जो आप Google कर सके, because Google पे तो सब कुछ है, right? So you won't be able to learn everything. But जो words को मैं highlight कर रहा हूँ, kindly Google them up. So the first thing is markup language, and we discussed that markup language helps us to define format of a document. In the same manner, HTML also defines the document of our the structure of our web page document. Okay, view this website as a document, and you will be able to understand that this right over here, जहाँ पे मेरा cursor है, this is the, you can say, title or the branding of the whole website. ये WC schools है, then they have defined this logo कि ये जो हमारा document है, दिस इज लाइक अ वाटरमार्क. आप वाटरमार्क देखते होंगे डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे आप अगर हॉस्पिटल का एक बिल देखें डॉक्यूमेंट का, तो उस पे आपको हॉस्पिटल का एक लोगो दिखेगा, राइट? सो दिस इज अ जनरल कन्वेंशन इन अ डॉक्यूमेंट कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक डॉक्यूमेंट जा रहा है, यू विल हैव अ लोगो, यू विल हैव अ नेम ऑन द टॉप मोस्ट कॉर्नर. ओके, एंड देन दिस राइट ओवर हियर, दिस होल एरिया, इट्स नोन एज अ nav bar, navigation bar. Okay, I hope Ishnur ये सब note कर ले. So this right over here is a nav bar. This is the second thing you need to note while scanning the whole website. First thing was logo, or you can say a watermark. Second thing is a nav bar, navigation bar. So as the name suggests, it helps us to navigate through the whole website. Navigate करने में help करती है कि अगर मेरे को अभी इस website में JavaScript का page खोलना है, I'll be able to open that using this button kind of thing. Although, let me tell you that this is a hyperlink. How did I get to know that this is a hyperlink? If you notice carefully, तो आपको left hand corner पे कुछ दिख रहा होगा, https://www. that whole URL. So I get to know that ये जो बटन है ये एक hyperlink है जो मेरे को redirect करने वाला है इस डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में. ओके, इस HTML पेज से दूसरे HTML पेज में. And this is the stuff which a nav bar does, कि navigation करने में help करेगा. And this is quite basic stuff. Again, we have some buttons in this nav bar जो कि quite common है आजकल की modern websites में, क्योंकि you want that user engagement and user experience. अब WC school वालों को लगा that these are the buttons they need to show to their users, so they kept it in a nav bar. You can do that. We see another nav bar beneath a nav bar. So अब इन दोनों में differentiate करने के लिए I'll tell you that this nav bar was meant to redirect you to some different page which is not belonging to the category that we are already on to. अगर हम HTML खोले हुए हैं, so what they have decided is कि ये वाले जो topics हैं, ये most popular topics हैं, so they gave us quick access to them. इसलिए उन्होंने ये एक nav bar second बना दिया. Okay, and ये जो ऊपर वाला nav bar है, इधर आपको और options देखने को मिलेंगी, and you can just access them if you want to. But they want that अगर एक user को HTML पढ़ रहा है वो, they know that second thing जो user open करेगा that is going to be CSS. So this is more of a user experience part rather than web development part. But again, user experience and web development goes hands in hand. Okay.
So ये synonymous हैं. You can say अगर user experience की बात हो रही है, website will be something synonymous. Next thing, let's discuss some topics of HTML that we need to learn. The first thing is HTML editors. So it's not just HTML editors we are going to talk about. हम एक काफी general broad manner में इनके बारे में देखेंगे. So what is this editors? अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स सिस्टम प्रोग्रामिंग अभी पढ़ रहे होंगे, so you guys must know that we have, you can say, code editors या फिर editors in a general term. So हमारा अगर मैं नोटपैड खोल देता हूँ, this thing is known as a text editor. Okay, and this is one of the editors. Okay, so now notepad editor क्यों बुलाते हैं इसको? Because it is helping us to edit our text. I can edit this text कि अब मेरे को text नहीं लिखना, मेरे को text लिखना है, और I want to write a whole sentence that this is a sentence, and then I can have a full stop. That's why it's known as editor. Of course, common sense, right? But the next thing I'm going to introduce you is a more, you can say, a higher variant of a notepad, okay, and which is specifically meant for people like us, I mean programmers and coders who can write, who can get leverage out of such editors. And let me give you an example. So if we have to write HTML, we can use notepad to write it. That's fine. But when we talk about such kind of websites, जो एक हमारे सामने खोली भी है WC School. So WC School जैसी वेबसाइट को अगर हमें कोड करने बैठ गए नोटपैड के ऊपर, it would take us several centuries. Okay, so we need some advanced methods, advanced solutions. And अब हम notepad use नहीं करते. We have some advanced text editors like Sublime Text Editor. I'll just open it up. It's on my screen. ये मेरा personal favorite रहा है for like the first year because it's quite clean. It provides me a clean interface. If I press Ctrl+N, I'm getting a new tab. I can save it Ctrl+S, and then I can save it on my desktop, which I'm doing specifically purposefully for this session. क्योंकि हमें सेशन में एक HTML फाइल क्रिएट करके देखनी है कि कैसे HTML क्रिएट होता है. Only then I would believe कि हाँ ये सेशन पर्पसफुल रहा है. So I would call it GDSC session 1 for HTML. Please note, अगर हम एक HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, so its extension needs to be HTML. Okay, and also please note कि अगर मैं यहाँ पे .htm extension use कर लेता हूँ, then also you will be able to create an HTML document. And in fact, I'll just use this HTML. हो सकता है आप लोगों में से कईयों को ये ना पता हो that we can use .htm extension for the HTML document. And इसके पीछे a basic story, okay, कि .html and .htm इन दोनों से हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. बट फिर ये दोनों में डिफरेंशिएटर क्या है कि HTML का क्या स्पेसिफिकेशन है या फिर HTML की क्या स्पेसिफिकेशन है. लेट मी टेल यू दैट .htm जब बनी थी तो उस टाइम पे जो ब्राउजर्स हमारे यूज होते थे, जैसे अब तो हमारे पास गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, ब्रेव ब्राउजर. बट उस टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउजर्स में या फिर लिनक्स पे जो ब्राउजर्स होते थे, 3 डिजिट एक्सटेंशंस से बड़ी एक्सटेंशन अलाउड नहीं थी. I mean HTML. Let's count the digits, right? HTML. That's 4 digits. So 4-digit extension या फिर 3 से ऊपर वाली extensions were not allowed. So that's why we had .htm. But now we don't have any kind of that kind of limitation on our browsers. So you can use either of them. Both of them are supported on modern day browsers. Okay. So we were talking about this text editor. अब आप अगर देखें, then this is also a text editor. This is a sentence. I'm able to type it. I'm able to edit it. This is not a sentence. This is a HTML document, right? This is a HTML document. So I'm able to edit it. And also, what's the difference between Notepad and this one, right? क्या ये colorful है? Yeah, that's one benefit. इसमें हमें themes मिल जाते हैं, which is more personalized. We are used to see themes and colorful windows. Okay, but the best benefit about a text editor or more advanced IDE is we get snippets. So this right over here, you saw that कि मैंने थोड़ा सा कोड लिखा, enter press किया, and I got this boilerplate code. So boilerplate code is a keyword. I'll just mention that in comments. So boilerplate, I guess boilerplate is code.
So I want to do things quick and I don't know हमारे पास आज के लिए enough time है, नहीं तो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता था आप लोगों से कि what is boilerplate code, because हो सकता है आप में से कई लोगों को इसके बारे में पहले से पता हो, right? So this thing right over here is a boilerplate code. होता क्या है? So I know that I always have to start my document with an HTML tag. For those who don't know, HTML is a language which operates on tags. Tags is like, this is an opening tag, this is a closing tag of the same tag. Okay, and this tag is known as HTML tag. ठीक है, इतना basic knowledge है, but in any case you guys don't know, just write in the comment, write in the section that message this section, and I'll be able to make it more basic for you. But proceeding further, ये एक HTML tag है, and then we have head tag. Inside that we have meta tag, which is telling us that the character set of this document is going to be UTF-8. और जो ये UTF-8 है, ये एक character set होता है जिसमें it tells us कि कौन से symbols allowed है एक document के अंदर. Like let's say मैं यहाँ पे rupees symbol डाल देता हूँ या फिर tilde का sign डाल देता हूँ, so ऐसे symbols क्या मेरे document में allowed है, ये decide करता है मेरा character set. And ऐसे ही बहुत सारी information है जो हम meta tags के through pass कर सकते हैं. Like this character set one, then this name viewport. So this defines कि मेरे viewports क्या होने चाहिए मेरे document के, right? So ये सारी technical information जो है ये आपको धीरे धीरे experience के साथ पता लगेगी, rather than आप एक YouTube वीडियो देखो और उसमें सब कुछ बता दिया हो. Okay? किसी भी YouTube वीडियो में सब कुछ नहीं होता, ना किसी एक blog article में सब कुछ होता है. So right over here we have a title tag, and let's add some title of this document, right? So title में we can say this is a template document, right? Okay, done. So this is the header part where we pass some information regarding the document, और जो document में information हमें display करवानी होती है, that is this right over here. So हमें वो information body के अंदर डालनी होती है, हमारे document के body के अंदर, and वो information हम ऐसे डाल सकते हैं that this is an information. This is an information. Okay, we are done. इस document को view कैसे करेंगे? So with the text editor, you get this functionality that if you right click, you would be able to see open in browser. अब ये Sublime text editor की specific है. अगर मैं यही VS Code में open करूँगा, then there must be some different shortcut. Okay, so you need to understand कि आपको explore करना पड़ेगा, अलग-अलग text editors को explore करना पड़ेगा, IDs को explore करना पड़ेगा. For now, let's view this document. I'll open it up. You can see that I'm getting this is an information exactly like I typed. यहाँ पे हमें हमारे टाइटल की इंफॉर्मेशन मिल रही है that this is a template document, right? And this right over here shows us that मेरी फाइल जो खुली है that is GDSC session1.html, and .html is totally working fine. So that's cool, everything's fine, right? If you open WC Schools again, you'll see they have given us some document. Let's copy that. Write some HTML. Let's write some HTML. I'll just delete everything and paste right over here. Let's view this now. So view करने के लिए मेरे को right click करके again open in browser करने की जरूरत नहीं है. I'll simply go to the tab जहाँ पे मेरा document open था. This is the document, right? GDSC session 1. But इसमें हमने कुछ changes किए हैं जो अभी तक यहाँ पे reflect नहीं हुए. उसका simple से reason है, we need to refresh the page. And as soon as you refresh, by the way, I pressed F5 for refresh, but आप यहाँ से भी refresh कर सकते हैं, या फिर you can press Ctrl+R for refreshing. And then you'll be able to see this is my first heading and this is my first paragraph, and you can see that correspondingly यहाँ पे हमने h1 tag का use करके एक heading डाली है and paragraph tag का use करके एक paragraph mention किया. So that's how HTML operates. ये सब आप पढ़ सकते हैं WC Schools पे. यहाँ पे मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, ओके? वो आपने मेरे को फीस नहीं दी, ठीक है? आपने यूनिवर्सिटी फीस दी है तो यूनिवर्सिटी वालों से ही पढ़िए. बट मेरा काम यहाँ पे क्या है कि आई विल इंट्रोड्यूस यू टू दिस थिंग. अगर मैंने HTML को इंट्रोड्यूस किया, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अनदर थिंग कि HTML से आप करोगे क्या. Recently, I got this client, alicowindows.com. I was writing the same HTML as I showed you right now, and you can see I was able to create such a beautiful website. अब यहाँ पे अगेन ये तो कुछ this is a heading, this is a description जैसा नहीं दिख रहा जो हमें इस पेज पे दिख रहा है, राइट? बट हाँ, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे दैट आप HTML समझ चुके हैं, राइट, और CSS समझ चुके हैं, एंड थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी इसमें यूज हो रही है, लाइक यू कैन सी आई कैन स्क्रॉल थ्रू दीस स्लाइडर्स, यू विल बी एबल टू कोड सच वेबसाइट्स
This is totally for the ones who don't know कि HTML CSS से आप क्या क्या बना सकते हैं. It took me around 3 days to create such website, and it won't take you more to create the same अगर आप HTML को अच्छे से समझ जाते हैं. Okay, and I'm also giving you a deadline. एक डेडलाइन लीजिए, like you know today is 4. अगर आज आप HTML सीखना शुरू करते हैं, then how much time would it take for you guys to learn the whole HTML? It should take anywhere around 2 weeks to 3 weeks. Okay, अगर आपको 3 weeks से ज्यादा लग रहे हैं, that doesn't mean you are a slow learner. That would simply mean कि आप गलत तरीके से सीख रहे हैं. Because HTML को सीखने का सिर्फ एक मेथड है. That is, you have to practice it. HTML is not a game of logics, but rather कि आपको पता है कि अब मेरे को ये चीज चाहिए तो मेरे को ये टाइप करना है, अब मुझे ये चीज चाहिए तो मेरे को ये टाइप करना है. It's just like that. If you know you want 5, you would just simply add 2 plus 3, right? So उसी तरीके से you need to practice. You need to practice the HTML. And there's this important topic I would like to move further with. That is CSS. Right now, what we did was हमने देखा कि HTML सिर्फ इतना ही है. You have to use tags जिसमें आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पास करोगे. Like this is an H1 tag जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग लिख दी that this is my first heading. I can simply edit it because this is a text editor, right? So मैं इसको edit करके लिख सकता हूँ that we are done with HTML. पैराग्राफ में लिख देते हैं time to move on to CSS. Okay. And also let's add a paragraph, but this time I would make it interesting. So did you know, let us say मुझे एक डिजाइन बनाना है मेरे क्लाइंट के लिए. उस क्लाइंट ने मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी that what kind of heading should be there, what kind of paragraph should be there, what kind of images should be there, right? So मैं उसके लिए अब कैसे बनाऊंगा वो पूरा एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाऊं जब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. So in that case, what we add is dummy content. Like this is a dummy heading. Okay. अब पैराग्राफ में क्या लिखें? Because पैराग्राफ में अगर हम यही बार-बार लिखते रहे, then it won't be appealing, right? So what can we add? So there's this interesting thing known as lorem ipsum. Once you type this, just press tab. Okay, sorry. Once you type lorem, just press tab, and it would automatically type a boilerplate paragraph for you. So अब ये पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन इसने ऑटोमेटिकली लिख दी है. एंड you can do is, let's say मेरे को इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं चाहिए, so I would delete some characters from it and it just does the work, right? और अब if I open, it seems a better document, right? But it seems very basic कि मतलब बस black and white colors हैं, उसका font size बड़ा है, paragraph का छोटा है, but I want to change the paragraph's font size, the color of this heading, right? So how can I do that? Let me close these tabs. And the stuff I'm talking about is CSS. अगर मुझे इसका color change करना है, I need to know what is the valid CSS for the same. So let's open this up. And we are still at 5:30. And I believe मेरे को HTML जितना मेरे को बताना था, उतना मैं बता चुका हूँ. But in any case, if you have any kind of doubt regarding HTML, I'm like willing to spend some minutes, like 5 minutes, and I can take your doubts if anyone is interested to ask. I'll just wait for another minute and then I'll proceed. Tab tak you can just replenish yourself. In fact, let's pivot this session. थोड़ा सा topic change करते हैं. HTML बहुत बार पढ़ा लिया. Anyone would like to ask any kind of questions regarding? मैंने अभी share किया, right? कि मैंने एक client था मेरा जिसके लिए website बनाई. Is anyone interested in that? Sir. जी पूछिए. Sir कोई YouTube चैनल HTML के लिए बढ़िया सा. YouTube चैनल करो मत. HTML के लिए YouTube करने की जरूरत नहीं है. YouTube आप क्यों करोगे? बिकॉज आपको वीडियो देखनी है उसके चीज की कि आपने इसको जब ट्राई करोगे तो कैसा दिखेगा उसको, राइट? शुरू करना सर. शुरू करना ना, तो शुरू कीजिए. WC स्कूल से शुरू कीजिए. आई हैव आल्सो गिवन यू अ टारगेट कि 2 हफ्ते लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए. और अगर 2 हफ्ते में दिक्कत आती है,
आई गेस कम्युनिटी ग्रुप्स ओपन है, जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए उस प्रॉब्लम का, कम्युनिटी में डालिए एंड वी वुड बी एबल टू हेल्प यू देन। बस शुरू कीजिए। ओ, शुरू करने के लिए यूट्यूब चैनल चाहिए, शुरू करने के लिए लैपटॉप खोलिए, HTML डॉक्यूमेंट बनाइए और शुरू करिए। ठीक है सर। Anyone else? Any interesting question you guys would like to ask? I want to ask one question that when we want to add some images in our HTML, then how can we add the images which are under copyright? Under copyright. Okay, I'll just answer that then. क्योंकि this is quite a valid question. इस stage पे मेरे ख्याल से काफी advanced है. But yeah. सो कॉपीराइटेड इमेजेस हो सकती हैं, जैसे लेट से आपका मेरे पास कोई क्लाइंट आया जिसका फैशन स्टोर है, कुछ क्लोथिंग स्टोर है ना, एंड ही सेल्स क्लोन्स ऑफ गुच्ची एंड सम काइंड ऑफ ब्रांड्स, कि उसके पास वो कपड़े हैं एंड नाउ ही वांट्स कि मेरा जो प्रोडक्ट का कार्ड है उस पे मेरे को वो फोटोग्राफ चाहिए गुच्ची वाली, राइट। तो गुच्ची वाले बहुत इस चीज में पर्टिकुलर है, इसलिए मैं इस ब्रांड का नाम ले रहा हूँ। वो इंस्टाग्राम पेजेस भी डाउन कर देते हैं अगर आप उनकी फोटोग्राफ्स यूज करें, और वेबसाइट पे भी वो एक चीज होती है दैट्स नोन एज DMCA। DMCA स्ट्राइक मार सकते हैं और आपकी वेबसाइट डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कुनीत, एंड इसमें बेसिक सा आंसर है दैट एडिट दैट इमेज को एडिट ऐसे कीजिए दैट द प्रोडक्ट दैट यू आर शोकेसिंग शुड बी सीन, कि विजिबल होना चाहिए सामने वाले को, उसको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है जो मैं खरीदने वाला हूँ। एंड उसके बैकग्राउंड को चेंज कीजिए, उसके ऊपर एक वाटर मार्क लगाइए। वाटर मार्क कुछ भी हो सकता है, कि उसके डाउन में थोड़ा सा अपने वेबसाइट का नाम लिख दिया कि www.fashionstore.com, ठीक है। बेसिकली उसको एडिट करना इज द मेजर डील। एंड हाँ, वो भी आपको सिक्योर नहीं करता कि हाँ कॉपीराइटेड है तो मतलब एडिट करने से पूरा ही सिक्योर हो गया। वो भी सिर्फ एक यू कैन से कि जल्दी पता नहीं लगेगा, पता जरूर लगेगा कि वो कॉपीराइटेड इमेज यूज हुई है। या डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Usually, when I try to make place that copyrighted images, it doesn't make any sense. Means it doesn't show that image. It doesn't show that image in Yes. HTML? In the proper ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। do you have that? Because uska screenshot लीजिए, post it in community, because Okay. I need to see this particular case. You're saying कि वो show ही नहीं होती, but I don't think so ये issue होना चाहिए. So this is technical. ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟਡ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਅਪਲਾਈ। No, that should not be the case. क्योंकि वेब में कुछ भी कॉपीराइटेड नहीं होता जब तक स्ट्राइक ना बजे। सो ये टेक्निकल इशू है जो आप फेस कर रहे हो, उसमें कॉपीराइट का कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, राइट। आर यू वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट? नहीं, I Okay, just so recently learned about it, so it was my major one of the problem I was working with. okay, so like what is this regarding? I was trying to ask that. कि are you working on some personal project or some No, I client was just learning in the learning process. learning process for learning sake you are learning? Yes, yes. That's cool. But you should also work on projects, you know. Only then you will be able to understand कि एक चीज को complete कैसे करते हैं. Sure. Right. But it's nice कि आप ऐसे छोटी छोटी functionalities पे work कर रहे हैं, क्योंकि of course बड़ी चीज भी छोटी छोटी चीजों से बनती है. So that's cool. Thank Okay. you. Is anyone else interested to talk or discuss anything? I'm open to that. GDSC वाले टीम वाले भी कर सकते हैं भाई डिस्कस। हमारी कौन सी वैसे बात हो रही है रोज? No one? तनवीर पूछो। Hello. Hello. Actually, I had a doubt. I had been working on some websites. I just wanted to know that when do we get to know we are to use a container or a section or some article? Can you explain the difference between them? Sure thing, but I just want to ask, are you specifically talking about Bootstrap or just a normal general query? Just normal general. Okay, let me show you then. Okay, so your question is something which targets some intermediate developer. So I believe अगर कोई यहाँ पे नहीं जानता
we have some several container tags या फिर उनको block level tags भी बोलते हैं, just like a div. एक div एक container tag होता है. And तनवीर, अगर मैं जो आपका आंसर नहीं कर पाऊँ, just reply me, okay? मैं पहले पूरा आंसर कर देता हूँ. Just tell me if I'm able to answer your query, the valid one. Okay. So we have some container tags like div. इस div में भी हम क्या करते हैं? Like see, body भी एक container tag होता है. तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ store कर पा रहे हैं. उसी तरीके से div भी एक container tag है. We use it to store stuff. अब क्या stuff? Let's say I type an h1 heading है कि this is a heading for my container. And then I just simply use the lorem ipsum, right? And then what I'll do is I'll just decrease the. चलो इतना ही रहने देते हैं. Let's open this up. So this seems fine, right? Now I already introduced you guys to navbar, right? So this is a navbar. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, this navbar is also a container because it's containing my logo. And this specifically I told about, this is nav items, okay? So एक individual item को we label it as nav item. So let's say I want to create this nav bar. How would I format that? इस document में क्या लिखूंगा मैं? What I'll do is I'll create a container, name it nav, and then I would create another container. I would call it div. Div stands for division. Div is an acronym और या के you बोल सकते हैं कि ये div की short form है. Okay. अब इस div में I'll just add an image. Image is for like img is for image tag, and then we have to define a source. But because I don't have any kind of image in my mind, I'll be using a dummy image over here. https://fake img. So fake image.pl is an API. जब मैंने नया word introduce किया, so I guess I should also mention it over here. Oops. Okay. Right. तो API, यहाँ पे मैं एक API का यूज कर रहे हैं. अब ये API का एंड पॉइंट क्या चाहिए इसको? इट नीड्स द डायमेंशन ऑफ द इमेज. सो आई एम टेकिंग एन इमेज ऑफ 100x100. ओके. तो मेरे नैपबार में मेरा लोगो आ चुका हुआ है जो कि एक डिवीजन के अंदर है, नैपबार के डिवीजन के अंदर. अब इस नैपबार में एक और डिवीजन बना लूंगा, एंड देन इसके अंदर अब आई विल क्रिएट अ यूएल, एंड इसके अंदर आई विल क्रिएट अ लिस्ट आइटम, एंड आई वुड कॉल इट. अब लिस्ट आइटम को आई वांट, if you remember, I told you that this is nothing but hyperlink, right? So I want hyperlinks. I'll just press A. This would give me an anchor tag which is used to create hyperlinks. And अब इस href में हम कुछ भी डाल सकते हैं. Let's redirect it to websites of my friends. So one of my friend is Anat, right? So anatsingh.com, I guess. I don't know. .meetup. I don't know. Let's call it that. Okay. और इस एंकर टैग में I'll be opening a list item. This list item में I would mention कि this is for Anat Singh, right? I'll just copy this whole thing. अब यहाँ पे मेरा ही डाल देते हैं. Although मेरी डोमेन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट सी है. And then I would call it my name. And फिर क्या करते हैं, एक और बनाते हैं. And then I believe let's add another friend of mine. अब इसके मेरे को URL याद नहीं है, but let's keep it like that. Simran.com. Let's it, right? Let's open, view this, and see कि क्या बना. Okay, so I have an image as I added. I have 3 texts, right? And let's see इस पे इसकी वेबसाइट चलती है? No. And अनंत पे चलती है? Yeah. So अनंत पे अनंत की वेबसाइट खुलेगी. इस पे ओपन करने पे मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा, and this would open my website. I don't want to view my website, by the way. And ये 3 हमारे पास nav items आ गए. Just like these guys have 1, 2, 3 and 4. These guys have 4. मैंने 3 ऐड किए for the reference. अब इसमें देखने वाली बात ये है कि आपका क्वेश्चन कैसे आंसर कर रहा है. So see over here. I would rename this div as section. This is going to be another section. Okay. And then I would have a main section. जिसके अंदर मैं main heading डालूंगा that okay, h1 this is a main heading,
मेन सेक्शन के अंदर मैंने एक हेडिंग डाली है एंड दैट्स माय मेन हेडिंग. देन आई हैव अ सेक्शन इन माय डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने अगेन एक H1 हेडिंग डाली है, उस सेक्शन की हेडिंग डाली है एंड उसका पैराग्राफ कंटेंट डाला जो हेडिंग का आंसर दे रहा होगा, राइट. एंड देन इन माय नैप बार, you know how systematically I have designed it कि मेरे नैप बार में दो डिविजन्स हैं. If you view it, मेरे नैप बार में दो डिविजन्स है. In the first division I have my image जो कि मेरा लोगो है. In the second division I have my a list, one of the एक लिस्ट है मेरे पास जिसके अंदर मेरे पास 3 एंकर टैग्स है. सो अगर मेरे को इन एंकर टैग्स को बुलाना है देन आई कैन गिव इट अ क्लास nav hyphen item जो कि हम अभी देखने वाले हैं बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट CSS, राइट. I can give the same class to this and this as well. Okay, so this is the system I'm creating कि मेरे पास एक navbar bar है जिसके अंदर दो divisions हैं. In the first division I have an image और वो image काम क्या कर रही है, logo का काम कर रही है कि this is logo for my website. And second division में मेरे पास एक list है जिसमें काम क्या हो रहा है, that I have some items which are my nav items. ठीक है, तो मेरे nav bar की nav items is in the second division and the first division contains the logo. So that's how you containerize your HTML document. हम एक HTML document को कंटेनर के फॉर्म में व्यू करते हैं कि मेरा पहला नैप बार आ गया, उसके नीचे एक बॉटम बार आ गया या टॉप बार आ गया, देन वी हैव अ साइड बार. आई कैन शो यू दैट इन डब्ल्यू स्कूल कि फर्स्ट थिंग मेरा नैप बार आ गया, देन वी हैव अ बॉटम बार, then we have a sidebar this time right over here, and this is the main section. Inside the main section I also have another sidebar which is on the right hand side जिसके अंदर कुछ again another items हैं, जैसे एक advertisement है, this is another product of W school. Okay, and this main section के अंदर क्या है, the main thing. Okay, main के अंदर main ही होगा, right. So HTML works more on semantics. एक term है, let's call it semantics. Semantic means logical. Wait. So comment नहीं कर रहा, ठीक है, I'll just delete this up. So semantics means logics कि logically thinking मेरा nav bar किस में आना चाहिए, किस कंटेनर में आना चाहिए. It should be inside a nav container, right? तो nav container की पहली डिवीजन को मैं क्या बोलूंगा, a div. सेकंड डिवीजन को क्या बोलूंगा, a div. एंड उस div में अगेन अब इमेज जानी है तो इमेज के लिए तो इमेज टैग ही आएगा, राइट. सो इट डजंट रियली मैटर विद द कंटेनराइजेशन बट रादर द राइट सिलेक्शन ऑफ टैग्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक UL लिया है. आई कुड हैव टेकन OL बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन मी कि मेरे को क्या सेंस बनी, मेरे को UL की ज्यादा सेंस बनी या OL की ज्यादा सेंस बनी. ओके, सो HTML में आपको बहुत सारी ऑप्शंस भी मिलती है. यू जस्ट हैव टू पर्सनलाइज इट कि मेरे को क्या सही लग रहा है, मेरे को वो लिखना है. ओके, मेरे को अगर सही लगता है तो मैं यहाँ पे nav की जगह पे कुछ और भी लिख सकता था, मैं लिख सकता था सेक्शन एंड ऑल, बट मेरे को सही लगा कि हाँ यहाँ पे nav ही आना चाहिए बिकॉज लॉजिकली इट्स अ nav. Does that answer your question, Tanveer? Because I believe मैंने Yeah, I got it. Thank you. Okay, I guess I should proceed, but in any case you guys are free to text me over here in call messages. Okay, and I believe आप लोगों से मैं already बहुत ज्यादा बातें करता हूँ. Like I know Guneet, I know Bhavneet, I know Tanveer. बाकी अगर लोग जो न्यू फेसेस हैं वो भी इंटरेक्ट करें तो काफी हेल्दी कन्वर्सेशन होगी. यू वुड बी एबल टू लर्न मोर फ्रॉम मी, आई वुड बी एबल टू लर्न मोर फ्रॉम यू बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू ग्रो, बिलीव मी. ओके, सो अब इसी के ऊपर वर्क करते हैं. आई टोल्ड यू गाइस कि मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर रहा हूँ nav item. ओके, तो ये CSS का एक पार्ट है. सो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से मेरे पास ये एक एंकर टैग है, फिर ये भी एक एंकर टैग है, एंड दिस ऑल्सो इज एन एंकर टैग, राइट. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एंकर टैग को एक प्रॉपर्टी देनी है कि वो एंकर टैग जो मेरा है इट शुड लुक लाइक अ बटन. ओके, कि वो अभी कैसा दिख रहा है, इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, एंड नाउ आई वांट इज इट शुड लुक लाइक अ बटन. अब ये चीज को डिस्प्ले करने वाला पार्ट जो है कि इसको इस तरीके से डिस्प्ले करना है, दैट्स अ पार्ट ऑफ CSS. CSS stands for cascading style sheet, but that's the theoretical part. Practical part of CSS is that it can make things look better. It can add colors to them, it can add sizing, spacing, positioning to a document, okay, to the content of document. So उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि इस एंकर टैग को मेरे को बटन की तरह दिखाना है, I would use this class nav item जिससे मैं इस एंकर टैग को टारगेट करूंगा मेरी CSS के अंदर. और अब CSS को कहां पे लिखते हैं, दैट्स द क्वेश्चन. क्या CSS के लिए मेरे को न्यू फाइल बनानी पड़ेगी?
So that can be one case. You can write CSS in three ways. The first one, write it inside your HTML, okay, and the position for that thing would be over here. So there's this thing known as attribute inside HTML. HTML में हमारे पास ये होता है tag. So if this is a tag, this is an attribute, okay, and style is the attribute we use to add CSS inside my HTML document to that particular tag. अगर बातें जो हैं भारी भरकम लग रही है तो इसको कहीं पे नोट कर लो एंड आई होप कि इश्नू नोट्स ले रही है ऑल्दो जिस फ्लो में ये सेशन चल रहा है उसमें काफी डिफिकल्ट होता है नोट्स लेना बट एनीवेज ये द एंकर टैग दिस इज द एट्रीब्यूट स्टाइल एंड इस स्टाइल के अंदर व्हाट वी विल बी एबल टू ऐड आई वांट अ बटन राइट so I'll add some padding to it. I'll say 10 pixel on the top and bottom and let's say 50 pixels on right and left. I'll add a background color of let us say black. और अगर background color black है, I want the foreground to be white. तो मेरे को color जो है वो इसका white करना पड़ेगा. Okay. अब anchor tag की एक default property रहती है this underline thing. तो ये underline जो है I want to remove it. So I'll say text decoration. इसके कारण ये underline आती है and I would say I don't want it. I'll say none. Let's view this again. आपको ये ऐसा दिख रहा है, okay? And let's improve its condition actually. So see the major problem. अब मेरे को इसको ठीक भी करना है, but यहाँ पे बहुत messy सा हो गया कि यहाँ पे कोड मेरे को दिखने में दिक्कत आ रही है कि मैं इसको रिमूव करूँ या इसको रिमूव करूँ या क्या करूँ, right? So what we want is कि इसको यहाँ पे लिखने के बजाय, यहाँ पे style attribute में लिखने के बजाय, let's add another tag. And you can see head is missing over here. तो मैं head up डाल दूंगा इसमें. And if you were able to smartly guess this thing कि head missing था फिर भी ये HTML चल रहा था कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, then it's really great because HTML में you will see no errors. HTML is the single language जिसमें errors नहीं मिलेगी आपको. Markup languages in fact markup languages में आपको errors नहीं मिलते, बस आपको last में favorable output नहीं मिलेगी. अगर मैंने कुछ किया और वो गलत तरीके से किया तो मेरे को एरर्स वो देखने को नहीं मिलेंगे, वो चीज चलेगी बट मेरे को लास्ट में जो चीज दिखेगी वो सूटेबल नहीं है. लाइक मैंने यहाँ पे अभी कुछ लिखा था राइट, मैंने स्टाइलिंग दे दी थी बट यहाँ पे मेरे को एक फेवरेबल आउटपुट नहीं मिल रही बट आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ एरर्स. ओके सो HTML लैंग्वेज में देयर आर नो एरर्स. आई गेस समवन वांट्स टू टॉक, किसी को कुछ बोलना है? ओके लेट्स मूव फर्दर. ओके सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ. वेट आई विल सेव इट. तो ये वापस रिटर्न हो गया एंड लेट्स टारगेट दिस यूजिंग क्लास नेम दिस टाइम. सो यहाँ पे हेड टैग आ गया मेरे पास, उसके अंदर पिछली बार मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया था, नाउ आई एम गोइंग टू यूज स्टाइल टैग एंड इट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइजेस दैट द टाइप ऑफ द स्टाइल इज CSS और इट्स गोना बी नॉर्मल टेक्स्ट. तो मैं CSS ही डालने वाला हूँ एंड टू टारगेट अ क्लास देयर इज दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स कि आपको डॉट से शुरू करना होता है और फिर उस क्लास का नाम लिखना होता है लाइक nav item, राइट? दैट इज द क्लास नेम एंड फिर उसके बाद these curly braces and then you can press enter for a better format. कि अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ and I'll format this a little, I'll save it and you'll see we see that उन तीनों पे वो same style copy हो गया जो गलत सा style था. But let's improve this now. So padding is done. I guess it's problem with width 100%. Let's see. Okay, not width. एक बार padding को remove करता हूँ. That does nothing surprisingly. Text decoration is none and color is white and all. Padding okay. I guess margin देके देखते हैं. Margin should be around 100 I believe 30 pixels. Let's see. Okay. Okay, I get it. So इस चीज को मैं रिवर्स कर देता हूँ, मैं इसमें फिर से प्रॉपर्टीज डालूंगा. This time I'll show you what I'm doing. So I told you that with the text decoration none, what we'll see is वो underlines remove हो जाएंगे, right? You can see these bullets. These bullets are property of list item. ये खुद से आते हैं list item के कारण. So इन list items को remove करने के लिए I won't give them the class now. ठीक है? मैं यहाँ पे list item को भी अब ऐसे class दे के नहीं करने वाला. I'll do a quick method. वो क्या होने वाला है? That I know कि ये list item जो है, if you see it properly, ये anchor tag के अंदर आ रहा है. Okay, so anchor tag is basically containerizing it. Okay, you see that anchor tag is opening over here, it's closing over here, and list item is in between that. So it's containerizing it. Anchor tag जो है उसका container की तरह act कर रहा है.
तो मेरे को क्या करना है, उस कंटेनर को टारगेट करना है like this, and then I can simply mention the tag name like list item, and now I can apply some properties कि जैसे मैंने उधर से अंडरलाइन रिमूव की थी यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन, या से आई कैन रिमूव द बुलेट्स बाय लिस्ट स्टाइल टाइप, let's see, so bullets are gone, right? next thing, अभी लिस्ट आइटम का बैकग्राउंड कलर देखते हैं, बिकॉज इसका मैं दिखाता हूँ आपको इनफैक्ट. सो द बैकग्राउंड कलर ऑफ लिस्ट आइटम, लेट्स से ब्लैक, एंड द कलर of the text should be white. That's what it should be, right? And now you see the problem. जो पिछली प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जो प्रॉपर्टीज मैं अप्लाई कर रहा था वो nav आइटम पे नहीं बट लिस्ट आइटम्स पे करनी थी, वो एंकर टैग पे नहीं बट वो लिस्ट आइटम्स पे करनी थी. So HTML is tricky in some manners. Not HTML, in fact CSS is tricky. HTML तो आपने देखा था that how quickly I was able to type HTML, right? So if you're starting up, HTML को जल्दी जल्दी खत्म कर लो because CSS में बहुत टाइम लगने वाला है. Okay. ओके, सो अब मैं थोड़ा सा जल्दी करने वाला हूँ काम, एंड यू सी कि एक फ्लो कैसा रहता है, मैं जल्दी जल्दी कैसे कोड करता हूँ. लेट्स सी दैट. व्हाट आई वांट इज कि नैप बार में लेफ्ट एंड राइट में आनी चाहिए चीजें. सो आई विल से डिस्प्ले फ्लेक्स. लेट्स सी. सो अब लेफ्ट एंड राइट पे चीजें आ रही हैं. नैप बार को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं. आई वुड गिव नैप बार ब्लैक कलर, और जो लिस्ट आइटम्स को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था वो मैं हटा दूंगा. इट वोंट क्रिएट अ डिफरेंस दो. और नैप बार में विड्थ हम दे देते हैं 100%. लेट्स गिव इट. And you can see that nav bar is now of black color. And क्योंकि मैंने display flex लगाया, I can use a property that is justify content, but rather I would use align items. You see, there are several properties that you need to remember. Align item center, and padding should be around 10 pixel on the top and bottom, and right left with 20 pixel is fine. So it's like this now. And हमें थोड़ी सी scrollability मिलती है because of the body. And there's also this property, box sizing, border box, and it would remove that scrollability for us. और हमारा नैप बार अब थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है जिसमें हमारे तीनों के नाम है, एंड इट्स क्लिकेबल कि मैं अनंत सिंह पे क्लिक करता हूँ तो इट्स रीडायरेक्टिंग मी टू अ वेबसाइट. देन दिस इज द मेन हेडिंग, राइट? सो इस मेन हेडिंग को अगर हम सेंटर में ले आए, सो वी हैव दीज एट्रीब्यूट्स लाइक अलाइन. तो अगर मैं इस अलाइन को सेंटर बोल देता हूँ, इट वुड सिंपली अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर. दैट्स फाइन, राइट? दैट्स कूल. And then let's target this section now. तो इस सेक्शन को CSS में टारगेट करने के लिए either I can use the tag name, मैं सीधा सेक्शन लिख के भी उसको टारगेट कर सकता हूँ, या फिर I can give it a class that is let's call it main container, and then I can target it like I did for the nav item कि main hyphen container. In container में हमें simply what we can say is let's decrease the width. Shall we decrease the width? Yeah, let's decrease the width. Let's say its width should be around 70%. Let's see the effect. So अब देख लो टेक्स्ट थोड़ा सा इस साइड आ गया क्योंकि अब कंटेनर की width हमने कम कर दी है. And then let's give it a margin. I'll say margin automatic so that ये left and right से center में आ जाए. And you can see it's centralized now, right? And a nav bar is like that. And हम nav bar में भी ये same concept को follow कर सकते हैं कि मैं इन दोनों के कंटेनर जो कि हमारा div बनते हैं, ठीक है, मैं इन दोनों को एक सेक्शन में डाल दूं, फिर इसको पेस्ट करते हैं, एंड आई वुड इंप्रूव द इंडेंटेशन. ये ध्यान रखिएगा कि आप इंडेंटेशन साथ साथ में ठीक करिए, बिकॉज देन यू वोंट फेस अ प्रॉब्लम. अभी हमें कोई डिफरेंस, हाँ डिफरेंस तो दिखा मैं. अब हमने जो nav को प्रॉपर्टीज दी थी वो प्रॉपर्टीज हमें सेक्शन को देनी पड़ेगी. सो आई वुड जस्ट रिवर्स द थिंग्स, और मैं इधर तक ही रखूंगा इसको क्योंकि फिर और मेरे को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी चीजें, तो इसको इधर तक ही रखते हैं. एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंट. एंड रिस्पॉन्सिवनेस भी एक कॉन्सेप्ट होता है HTML में, दैट अगर मेरा स्क्रीन साइज छोटा होता है तो यू नो हाउ माई थिंग्स शुड लुक लाइक. सो दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक ऑन अ मोबाइल डिस्प्ले, कि अगर आप अपना मोबाइल फोन खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा. आई नो इट्स नॉट लुकिंग वेरी नाइस और समथिंग, बट दिस इज समथिंग वी डिडंट प्लान, हमने ऐसे ही बना दिया था, एंड या दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी. So yeah, that's pretty much it from my side regarding HTML and CSS. कि HTML में हम tags use करते हैं, attributes use करते हैं, कुछ text लिखते हैं, और containerize करते हैं. Like this is a main container जिसमें मैं main content लिखूंगा. This is a section, a normal one. इसको मैंने class दी हुई है main container कह के, कि इसको मैं ऐसे ऊपर CSS में target कर सकता हूँ. उसी तरीके से अगर मेरे को एक nav bar create करना है, I would add a nav container. उसमें मैं कुछ divisions बनाऊंगा. Division first में मैंने एक logo डाला like a convention, एंड सेकंड में मैंने nav आइटम्स डाली है.
So that's how the whole HTML and CSS operates in a sync. And that's pretty much it about HTML CSS. If you want to learn more, rather than coming to me, you should follow this website, WC Schools. And there's this another website, MDN Docs. So WC Schools, WC वालों की है, and MDN is from Mozilla Firefox. तो इसमें से आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं. And if you find this one cool, इससे सीख लीजिए. My personal favorite is this one. So I've shared you the resources. I've shared you the flow कि HTML and CSS कैसे लिखते हैं. I've shared you that Sublime Text Editor is one of my favorite text editor. So 3 things that you can take away from this session. Anything apart from this that you are expecting from this session? जो आप सीखने आए थे और मैं नहीं सिखा पाया. I can cover it up right now. I'll just stop my screen sharing. किसी के कोई पर्सनल डाउट्स, कोई जानना चाहता हो दैट GDSC का वेब टीम लीड क्या करता है, कहाँ पे रहते हैं, व्हाट इज GDSC, एनीथिंग लाइक दैट. 6 बज रहे हैं, मुझे भी निकलना. सो अगर किसी को कुछ भी पूछना, you can just turn on your microphones and you can start, or else we can conclude this session. Okay, let me ask you guys question. यहाँ पे कौन लोग हैं जो already HTML and CSS जानते थे? How many of you guys already knew about HTML and CSS? That's nice. Okay, Rohan is a new name for me. Rohan, are you already in GDSC or something? आप टाइप कर सकते हो. And I see Sagar for the first time. First time here. You are in first year? आप first year में? बाकी सबको तो मैं जानता हूँ. Okay. Rohan, if you are interested in web, and if anyone from you guys is interested in web, then I do have opportunities for you guys. Like मेरे पास already clients हैं, and हम front end पे work करते हैं, उनके softwares पे भी work करते हैं.